Good morning students. So today we have to start our next topic, that is the periodic properties of elements. Actually last video we have seen that is the periodic property, but first periodic property, that is the atomic radii, and another the atomic valency we have seen. In next video, that is today, we have to see a next topic, that is the next periodic property, that is metallic and non-metallic characters. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स हे कशासोबत रिलेटेड आहे, तर मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे हे फ्री इलेक्ट्रॉन सोबत रिलेटेड आहे. आता व्हॉट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? सो इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, it is called as a free electrons. You can write also on your in your notebooks. So free electrons, that is electron present. Before that you have to know about the each and every metals contain free electrons in their outermost orbit. So as the जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, as the atomic radii goes on increases, then the distance, as the atomic radii goes on increases, then the distance from the center of the atom to the outermost orbit goes on increases, and due to this reason force of attraction become less or decreases, and free electrons easily or valence electron easily lose out from the outermost orbit. So it means it is necessary or it is related to the metallic and non-metallic character. जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इझिली आउटरमोस्ट ऑर्बिट मधून रिलीज होईल तेवढंच मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त राहते. जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट मधून इझिली रिलीज होईल तेवढंच मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त राहील, आणि जेवढं इलेक्ट्रॉन्स इझिली आउटरमोस्ट ऑर्बिट मधून रिलीज होणार नाही तेवढंच जे नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त राहील. तर आपण पॉइंट यासोबत लिहू शकतो, मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आर रिलेटेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन. सो मोस्ट नेसेसरी कंडिशन, that is metallic and non-metallic, for metallic and non-metallic character is the free electrons. So most important condition for metallic and non-metallic characters, for metallic and non-metallic character is free electrons. Characters is free electrons, is free valence electrons. Barabar hai? Next one. So we have to see that is the how metallic character and non-metallic character increases or decreases in the group and period. So first of all we have to see the metallic character in the groups. So you know, as we go from top to bottom, जेव्हा आपण ग्रुपमध्ये टॉप टू बॉटम जातो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हा एक्स्ट्रा सेलमध्ये ॲड होत जाते. फॉर एक्झाम्पल लेट आय एक्सप्लेन द विथ द हेल्प ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दॅट इज लिथियम. नेक्स्ट वन द सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम and francium. So atomic number 3, then 11, next one the 19, next 37 etc. So atomic number, as the lithium has a atomic number 3, its electronic configuration is 2-1. Next one is the 2-8-1. Next potassium साठी electronic configuration is 2-8-8-1. rubidium 2-8-18-8-1. So in this electronic configuration it is seen that as we go from top to bottom, then it is seen that outermost electron goes on enter into the outermost orbit, and when we go from top to bottom, then extra electron added in the extra cell. It means that distance from the center of the atom to the outermost cell goes on increases, and as the distance from the center of the atom to the outermost cell goes on increases, it means that atomic radii increases. As the atomic radii goes on increases, then the outermost electron easily lose out from the outermost orbit. आणि अगोदर सांगितल्याप्रमाणे जर इलेक्ट्रॉन इझिली लूज आउट होत असेल तर मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त राहील. यावरून असं लक्षात येते की ग्रुपमध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर हे इन्क्रीज होत जाते.
So means we can write that is the when we go from top to bottom in the group, when we go from top to bottom in the group, then extra electron added in the extra cell, it means distance goes on increases, from top to bottom, from nucleus to outermost orbit, from nucleus to outermost orbit, and outermost electron यानी कि valence electron and outermost electron or valence electron easily lose out from the outermost orbit, result metallic character goes on increases, that is metallic character goes on increases from top to bottom, from top to bottom or group. So from this it is understand that is the when you go from top to bottom, then extra electron added in the extra cell. As the extra electron added in the extra cell, it means that the distance from the top to bottom, that is extra electron added in the extra cell, it means that extra electron added in the extra cell, it means atomic radii goes on increases, and as the atomic radii goes on increases, outermost electron or valence electron easily lose out or easily remove from the outermost orbit. It means that metallic character goes on increases. म्हणजे यावरून असं लक्षात येते विद्यार्थी मित्रांनो का जसं ग्रुपमध्ये लिथियम पासून आपण फ्रॅन्सियम पर्यंत जातो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हा एक्स्ट्रा सेलमध्ये ॲड होत जातो आणि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेलमध्ये ॲड होत असल्या कारणाने फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स कमी होतो का, कारण ॲटॉमिक रेडाई इन्क्रीज होते आणि जेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स कमी होईल तेवढंच इलेक्ट्रॉन जो आहे लूजली बाउंडेड राहील आणि तो इझिली लूज आउट होईल, म्हणजेच मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होत जाते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर इन केस ऑफ पिरियड, सो इन केस ऑफ पिरियड इट इज मीन्स हॅपन इट इज अपोजिट टू दॅट ऑफ द ग्रुप. सो वी कॅन राईट मीन्स when we go from left to right in the period, then extra electron added in the same cell, so obviously distance goes on increases, force of attraction goes on increases, and as the distance goes on decreases, then extra electron is not easily pulled out from the valence cell, and hence non-metallic character goes on increases, it means metallic character goes on decreases. तर जेव्हा आपण पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईटला जातो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हा सेम सेलमध्ये ॲड होतो आणि जसं जसं इलेक्ट्रॉन सेम सेलमध्ये ॲड होईल त्यामुळं डिस्टन्स जे आहे ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स वाढेल आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढल्यामुळं ॲटॉमिक रेडाई कमी होईल आणि त्या कारणाने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनमधला इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इझिली लूज आउट होणार नाही, म्हणजेच मेटॅलिक कॅरेक्टर हे कमी होईल, म्हणजेच नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढेल. सो वी कॅन राईट दॅट इज द when we go from left to right, when we go from left to right in period, then extra electron added in a same cell,
a same cell which increases the force of attractions, which increases force of attraction between nucleus and outermost electron, between nucleus and valence electron. Which is difficult to pull out electron from outermost cell, and hence metallic character goes on decreases, and hence metallic character goes on decreases in period. तर मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे तर पिरियडमध्ये डिक्रीज होत जाते. तर यावरून आपल्याला समजू शकते की मेटॅलिक कॅरेक्टर आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर पिरियड आणि ग्रुपमध्ये याचा ट्रेंड कसा राहू शकतो. तर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, पिरियडिक प्रॉपर्टी आहे ती म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आताच जसं बघितलं मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स हेच रिलेटेड आहे ते म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी सोबत. सो रिॲक्टिव्हिटी ऑफ ॲन एलिमेंट्स, सो यू नो metals are high reactive as compared to obviously non-metals. So reactivity means metallic characterचा जसा ट्रेंड राहील ग्रुप आणि पिरियडमध्ये तसाच रिॲक्टिव्हिटीचा सुद्धा ग्रुप आणि पिरियडमध्ये सेम ट्रेंड असतो. तर बघा how reactivity is differ in the group and period. So first of all we have to know about the what is in reactivity. So reactivity is related to the or reactivity of an element is related to the loosely bounded electron. So हम ऐसा भी लिख सकते हैं reactivity of an elements is related to free electrons. So reactivity of an element is related to the free electrons. जर reactivity जर free electron सोबत रिलेटेड असेल तर त्याचा ट्रेंड हा ऑब्वियसली ॲटॉमिक रेडियसवर डिपेंड्स राहील किंवा मेटॅलिक कॅरेक्टरवर डिपेंड्स राहील. जेवढं ॲटॉमिक रेडियस जास्तीत जास्त तेवढं मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त, आणि जेवढं मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त तेवढंच रिॲक्टिव्हिटीसुद्धा जास्त राहील. सो याचा ट्रेंड आता बघायचा आपल्याला ग्रुप आणि पिरियडमध्ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी रिॲक्टिव्हिटी इन द ग्रुप. सो रिझन इज सेम, that is when we go from top to bottom then it is seen that extra electron added in the extra cell, and as we go from top to bottom obviously atomic number goes on increases, extra electron added in the extra cell. It means that distance from the center of the atom to the outermost cell goes on increases, and as the distance from the center of the outermost cell goes on increases, it means that atomic radii increases and obviously metallic character increases and simultaneously reactivity also increases. So जो स्टेटमेंट हमने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में लिखा है वही स्टेटमेंट हमें रिएक्टिविटी के बारे में भी लिखना है, और सिर्फ जो ट्रेड है वो भी सेम रहेगा. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स goes on increases from top to bottom in the group, from top to bottom in the group. So let I explain how the reactivity goes on increases. तो अगर मैंने लिथियम का एग्जांपल लिया फर्स्ट ग्रुप का, या फिर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है बेरिलियम,
उसके बाद भी मैग्नीशियम, नेक्स्ट वन द कैल्शियम, नेक्स्ट वन द स्ट्रॉन्शियम, नेक्स्ट वन द बेरियम, रेडियम, लाइक दिस. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेरिलियम का 2 देन मैग्नीशियम का जो है 282, कैल्शियम का जो है वो 20 एटॉमिक नंबर, सो 2882. सो मीन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इट इज सीन दैट extra electron, obviously atomic number goes on increases, but as the atomic number goes on increases, it means that extra electron जो है वो extra cell में ऐड होते जा रहा है. और अगर वो extra electron extra cell में ऐड होता है, so जो distance है कहाँ से center of the atom to the outermost orbit, it goes on increases. जैसे जैसे distance increase होगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी ऑब्वियसली रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. सो हम ये लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. सो इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द न्यूअर सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेल, एंड एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट because force of attraction goes on decreases and hence means reactivity goes on increases. बाद में जो सेकंड नंबर में है पीरियड. सो पीरियड में क्या होगी, ऑब्वियसली जो सेम हमने जो रीजन देखा मेटेलिक कैरेक्टर में, वैसा ही रीजन सेम है रिएक्टिविटी के बारे में भी. एज द मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट हैपन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम सेल. एज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम सेल, देन what happen, the distance from the center of the atom to the outermost cell goes on decreases because nuclear charge and electron, outermost electron, इसमें जो force है वो बढ़ जाएगा. So as the nuclear charge and outermost electron, the force between the nuclear charge or nucleus and outermost electron goes on increases, then atomic radius goes on decreases, and hence it is not easy to pull out electron from the outermost orbit. It means that अगर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट से रिलीज नहीं होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इजीली रिलीज नहीं होता है तो उसकी जो रिएक्टिविटी वो कम हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, देन extra electron added in the same cell which increases the force of attraction between the nucleus and outermost cell. It is difficult to pull out the electron from the outermost orbit and hence reactivity goes on decreases in the period. So हम ऐसा लिख सकते हैं reactivity of the elements goes on decreases from left to right, in the period, left to right in the period. It means that, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है रिएक्टिविटी जो है वो पीरियड में डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीन्स डिक्रीज होता है. सो फर्स्ट वन वी हैव सीन दैट इज द मेटेलिक कैरेक्टर, और नेक्स्ट वन वी हैव सीन दैट अबाउट द रिएक्टिविटी. सो इन केस ऑफ जो मेटेलिक कैरेक्टर की जो ट्रेंड है ग्रुप और पीरियड में, वही जो है वो रिलेटेड है रिएक्टिविटी से.